In today's episode of Yash Talks About, I discussed the skill of graphology with my friend. She is a graphologist. Graphology is a skill to judge a person on basis of his handwriting. So I hope you would enjoy it. Go ahead. Hello, guys. Welcome back to my channel, and thanks for your support for the last podcast I put on the channel that was about friends. And you know Tanaya from the Friends podcast. She has been a great friend, and now she is recording this podcast because I don't have PC. So yeah, thank you for coming. And yeah, today we are gonna talk about something that's related to judging a person, like कैसे करते हैं मेरे को पता नहीं है. So that's why I have brought some of my friends Krutika and Sharanya to explain what it is, and like we are gonna discuss about graphology. It is like उनसे ही सुनते हैं क्या होता है. तो yeah, Krutika, can you just introduce yourself? Yeah. Sure. Hello everyone, this is Kritika here. So I'm a graphologist and I'm studying BMM in Ruya currently. So basically graphology is the science in which we understand a person's behavior and thoughts through handwriting and signature. And I also have my friend Sharanya here with me. We have been friends since 5th standard and she has been with me all throughout these years. And she also knows a lot about graphology and she has currently completed the graphology course. Over to you, Sharanya. So, hi everyone, I am Sharanya Nair. Even I am a graphologist now. I am doing a BA from SIS College. And according to me, graphology, as Kritika said, it's science to analyze a person's thought process. But it also gives like an unbiased outline of a unique personality. It tells it about a unique personality and behavior of an individual, like without them even being there or being present. So yeah. True. So you said graphology is like personal thoughts beats आपको समझते हैं, right? कि just by looking at our handwriting, right? So like मतलब कैसे, like my first experience was Krutika gave her introduction in class. I am a graphologist. I just texted her कि क्या होता है, क्या है, मेरे को जानने का है. And I gave her my handwriting and like 90 to 95% of it was true. Like true. एकदम पक्का. हाँ, that was like bro, इसको कैसे पता? Just by looking at my handwriting. Like समझ में किसी ग्राफोलॉजिस्ट के साथ डेट पे गया, वो मेरे को बोली लिख के दे कुछ, तो मेरा तो हो जाएगा. फिर ऐसा थोड़ी ना चलता है. तो लाइक हाउ यू जज जस्ट लुकिंग बाय द हैंडराइटिंग, ऐसा क्या होता है? लाइक हैंडराइटिंग पे देख के कैसे समझ? जैसे ईसीजी होता है हार्ट के लिए, तो डॉक्टर ईसीजी देखता है एंड बोलता है कि तुम्हारे हार्ट में ये प्रॉब्लम्स है या ऐसा सब चल रहा है. वैसे ग्राफोलॉजी में हैंडराइटिंग एंड सिग्नेचर होता है. तो सिग्नेचर और हैंडराइटिंग देख के हम बता सकते हैं कि पर्सन का थॉट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है. जो भी ये साइंस लर्न करेगा उसको ये आ जाएगा. It's scientific, like it's not like astrology. It's truly scientific, like psychology. प्रॉपर साइंस, लाइक लंदन यूनिवर्सिटी में ये सिखाते हैं प्रॉपर्ली कि पर्सन को जज कैसे किया जाए हैंडराइटिंग के बेस थ्रू ग्राफोलॉजी. हाँ, yeah, it's a directly different field. Like it's a field where you can learn things about it. But like I have a question कि अभी समझ, मैं बचपन से मेरा 5th स्टैंडर्ड से सेम सिग्नेचर है, सेम. और कभी कभी कोई होता है जिसका सिग्नेचर बदल जाता है बीच में, या फिर समझ में हाँ लाइक someone has another signature और 2-3 सिग्नेचर है. तो how you can like differentiate between those, like अगर दो सिग्नेचर रहेगा, 3 सिग्नेचर रहेगा, उनकी मर्जी है ना, कितना भी सिग्नेचर हो सकता है. So what do you think about it, Sharanya? I would say that handwriting changes like over a period of time, and वो time पे जो उनका जो handwriting होता है, that is the trait of that person, that is वो time का trait. So like वो time का personality is what they show it on, they write it down on the page. So yeah, and like what you told कि signature change होते जाता है, it is not true. I don't feel like that, because after you become major, you have to keep a fixed signature.
So like agar if you open an account and you like when you professionally you have to keep a fixed signature, so that is the only signature and maybe they will have some initials and ऐसा कुछ for like daily routine या फिर college में sign करना या ऐसा कुछ. So that मतलब really मैं बोल रहा था कि जब भी 4th स्टैंडर्ड में स्कॉलरशिप देते हैं तभी भी तो सिग्नेचर करते हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट सिग्नेचर फ्रॉम व्हाट आई एम signing right now. some people do it like 4th standard में everyone does it with time pass or curiosity. Yeah. they don't actually mean their signature like yeah ये किया है तो मतलब यही करेगा मैं lifetime. No, I don't think so ऐसा होता है. Okay. So मोस्टली सिग्नेचर 10th के बाद अपना पक्का हो जाता है कि कौन सा सिग्नेचर करना है, क्योंकि 10th में अपना ये होता है हॉल tickets and all. हाँ, तभी तो फर्स्ट टाइम जहाँ पे सिग्नेचर किसी बात पे प्रिंट हो रहा है अपना. हाँ, So can you tell me more about like मतलब इसमें ऐसा रहता है कि यू कैन जस्ट एक एक वर्ड कैसा लिखते हैं वो एनालाइज किया जाता है कि जस्ट द फ्लो ऑफ हैंड राइटिंग. लाइक अभी टी कोई लोग प्लस जैसे टी लिखते हैं, कोई टी ऐसा लिखते हैं, ऐसा भी हो सकता है ना. सो क्या होता है लाइक फ्लो पे जाते हैं कि एक एक वर्ड देखा जाता है? सब पे डिपेंड होता है एक्चुअली. वर्ड्स का अपने लेटर्स का साइज होता है, उस पे डिपेंड होता है. फिर हम लोग कितना प्रेशर डाल के लिखते हैं उस पे डिपेंड होता है. फिर हम लोग कितने लाइंस छोड़ के लिखते हैं उस पे डिपेंड होता है. फिर 2 वर्ड्स के बीच में कितना स्पेस है उस पे डिपेंड होता है. फिर लेफ्ट मार्जिन स्ट्रेट है या अनइवन है उस पे डिपेंड होता है. सो ऐसे बहुत थिंग्स है जिस पे डिपेंड करता है ग्राफोलॉजी. बट लाइक तो भी मेरे को नहीं समझा लाइक कैसे मतलब डिपेंड होता है फाइन, बट कहीं कुछ तो होगा ना लाइक एक मेन कुछ तो कि अभी समझ लेफ्ट मार्जिन अनइवन, अभी मेरा एक सेंटेंस खत्म हो रहा है इधर और दूसरा सेंटेंस खत्म हो रहा है इधर. सो इट्स नॉट माय फॉल्ट ना, सेंटेंस का फॉल्ट है. So like it's like why like how you can like no, but you chose to write it in the next line, or you chose to write it down with a hyphen, or you chose to like udhar hi compress karke मैं उधर ही word को adjust करूँ. So everything so that is your thought related to it. That is your thought related to it कि तू ऐसा ही क्यों लिख रहा है. So what if like मेरा होता है, तना तेरा भी होता रहेगा like when we write an exam paper right, और मैं स्टार्टिंग में मेरा एकदम मस्त हैंड राइटिंग है, एकदम वाह बेस्ट हैंड राइटिंग इन द वर्ल्ड, बट एट द एंड इट गोस बिकॉज़ ऑफ द टाइम. तो मैं देखो किसी का क्वेश्चन पेपर लाके दिया, देखो किसी दोनों को भी एक क्वेश्चन पेपर लाके दिया, हाउ विल यू नो कि एक ही बंदे का है कि दूसरे बंदे का है? सो लाइक अलग है ना, हैंड राइटिंग तो अलग है, दोनों हैंड राइटिंग अलग है. सो हाउ विल यू नो कि देख अभी मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा गलत हो गया, पहले एकदम मस्त था बाद में खराब हो गया. सो हाउ विल यू नो? मतलब अपने जो हैंड राइटिंग के ट्रेट्स होते हैं, जैसे तू ए कैसे लिखता है, टी कैसे लिखता है, या फिर डी वाई कैसे लिखता है, वो सब तू जब अच्छे से लिख रहा है तभी भी सेम होगा, और जब तू जल्दी में लिख रहा है तभी भी सेम होगा, सिर्फ वो थोड़ा शैबी होगा. तो हम लोग को वो समझ जाता है कि सेम पर्सन ने लिखा है. So you have learned it, like you have mastered it कि ये ऐसा होगा तो ऐसा. So like how much time does it take you to analyze? Like अभी मैंने 2 मिनट में ऐसा लिख के दिया देखो, तो can you do it in 2 minutes or it takes time to analyze things? It takes time. Like Sharanna, do you want to say? Yeah, like if you are a beginner, then you need to refer the notes. Like you have just started like a month or so, and if you keep on practicing, then you're a master, you're a pro, you can do it in like 15 minutes you can do. And then you keep on looking at the handwriting. तो जैसे you keep on looking at the handwriting, एक नया trait आपको मिलते जाएगा ऐसा. So it is a never ending thing. कुछ ना कुछ नया you will invent ऐसे, or you will discover. So it's like a psychologist thing, कि जितना तू दूसरों से बात करेगा, दूसरों का बिहेवियर समझेगा, उतना तेरा जल्दी समझने लगेगा, जल्दी क्या हो रहा है वो समझने लगेगा. Usually an expert takes around 15 to 20 minutes to analyze properly. Okay. And 15 to 20 minutes is for like professionally जो करते हैं, but
You guys are, do you do it professionally or तुम लोग ऐसे ही मतलब हॉबी था इसलिए सीखा? हॉबी था इसके लिए सीखा. So you don't do it personally. ठीक है, it's I'm हाँ, doing. मतलब जब सीखा था तभी हॉबी था, अभी प्रोफेशनली कर रही हूँ मैं. क्योंकि मेरे डैड एक ग्राफोलॉजिस्ट है. ओह, so तो आपके डैड कितने मिनट में कर सकते हैं? वो तो 2 मिनट में बता सकते हैं ये ऐसा. मेरे को 10 मिनट लगता है अच्छे से एनालाइज करने. I am afraid of it right now. अगर ऐसा कोई भी जज कर लेगा मतलब क्या बोलूं अभी ऐसा. मैं लिखा है कुछ भी and how like I was shocked. I was literally shocked when you said कि you are really close to your mom than your father. Like how can you know that thing कि तू तो मैं तो अभी भी तेरे से इतना बात नहीं करता. Like थोड़ा थोड़ा ओके ये नोट्स दे वो नोट्स रहेगा उतना है. You don't know me at all. Like zero in my personal life. You know me zero. Till you like how you ऐसा क्या था कि तेरे को लगा कि I am literally close to my mom than my father. So जैसे तूने I लिखा था ना, कैपिटल I, तो उससे पता चलता है अपने रिलेशनशिप विद आवर पेरेंट्स. तो जैसे तू लिखता है I, उससे मेरे को समझा that you are close to your mother. Like, but like, where can someone learn this skill? Like, you are a graphologist and you would have like listened somewhere this like कि इधर सिखाया जाता है. तो where can someone, if someone from the audience wants to learn the graphology skill, so where can he or she learn this? So we both learned from my dad's institute only. It's called the Graphology Research Institute, and it's a 20-year-old institute where my dad teaches graphology. So they can learn over there. Okay, like is there something like they can learn online or something, or they have to be physically? Yes. Yeah. Now because online courses are. Yeah. Sorry. Online courses chal rahe abhi. Okay, Sharanya, you were talking something. No, the same because of this pandemic. So Vinit sir, like his Kritika's dad, came up with this idea of online classes, and also I was like, yay! It was quite good. And it's he, like according to me, with my experience, I would say he's one of the finest graphologists I've ever seen. Is there like reputed other from your father's institute? Is there something like people would go there and learn this skill, like a university or in a college, like somewhere? Not an institute, but like in college or something. I don't think अभी तक इंडिया में तो है. इंडिया में नहीं है एक्चुअली. कॉलेज में नहीं सिखाते हैं. बट ऐसे इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट्स है जिधर सिखाते हैं. लाइक देयर इज वन इन पुणे, देन कोलकाता. बट आई डोंट नो द नेम्स, बट आई नो दैट देयर आर पीपल हु टीच ग्राफोलॉजी. Okay. So like then what is the certificate you get? Like you have mentioned like you are a certified graphologist. That's the main highlight in your bio. I know it. Like I have seen it. So like what is like certificate किस बात का होता है? क्या कहाँ से आता है? Like how are you certified? So certificate institute से मिलता है, and it's written that we have successfully completed an intense graphology course. Okay, like but like you said कुछ तो London University या कुछ कौन सा university you said like they have. हाँ so like हाँ मेरे को लगा like it's कभी कभी होता है ना कि यहाँ पे एग्जाम दो और वहाँ से सर्टिफिकेट आएगा. ऐसा कुछ होगा. Okay, so like tell me more about how you judge people based on handwriting. Like हर एक लेटर के बारे में कुछ थोड़ा सा like how tell me more about how you can judge people. So myself being a graphologist, my belief is that handwriting never lies. Like handwriting can never lie. So it it can literally reveal the writers or an individual what he thinks, he feels, or how he behaves. So it directly or indirectly it does the analysis ekdam aise immediately, and you get to know the person quickly. Like, but no, I was saying something more specific, like more specific. Yeah, like there are specific words and like handwriting pressure, the slant, like the way you write it,
which slant is it. If it's too much in right, then it shows how you are, like, and are you an extrovert, are you an ambivert, But personality. how can you just like you can know about the pressure just by I send her just a picture, like you can't like literally know how much pressure I like. I don't know how you are doing it, but you're like blowing my minds, right? Like how are you doing? I don't know, like I want to learn this skill. मैं माँ को बोला मेरे माँ दोनों करते हैं अपन मेरे को यूज करने का है, right? She was like मला काम है तुझं तू बघ. So I was like, okay, ठीक है. But like, I want to know some more specifics about things. Like, अभी देख इधर I will be there for you लिखा है इधर, okay, if you can see it, okay. So if what L I am just a line, अगर L में ऐसा line निकल रहा है और L I am writing in cursive, like how it differs? Like how can you tell me कि अगर एक बंदा L सीधा line निकल रहा है और L in cursive निकल रहा है तो उसमें फर्क क्या है? So L अगर मतलब वो कर्सिव जैसे लिख रहा है, so it means that you have thoughts, like creative thoughts. There can be a possibility that you have creative thoughts. And L अगर सीधा लिख रहा है, so you don't have that many thoughts. You can't think very creatively. वैसा. L का ग्राफोलॉजी में ज़्यादा importance नहीं है, but still there's little that we can say about L. There are certain words which are letters which have like great importance. Like such as I, capital I, small I, T, Y, then D, S, ये सब ज़्यादा important होते हैं. Okay, Tanay, you were saying something. Yeah, so I write both L's. Like कभी-कभी मेरा line वाला L आ जाता है और cursive भी आ जाता है, in flow हो जाता है. तो what is that? Like क्या तू depict कर सकती है उसके ऊपर? But like I have seen your handwriting, like तू पेन उठा के लिखती है ना, like your letters are not connected ना. No. So that means you are highly creative. Oh. So वो तेरा L या standing line पे उस पे इतना effect नहीं डालता है, because your letters are disconnected. So you are creative, वो हो जाता है, उधर ही वो बना देता है. You know she like lifts her pen. Fuck bro. How is she knowing this stuff? I don't know, bro. This is magic. मैंने उसका handwriting देखा है. Like I don't know, but I have some question. Like थोड़ा सा छोटा सा. Like being a boy and being in school, I was influenced by जिसका सबसे मस्त handwriting होता है class में, उससे अपन influence होता है. So my friend who was like उसका great handwriting used to write I और ऊपर एक circle. Usually I write I and dot. But he used to write I and circle. So I used to write like अरे उसको अच्छा दिखता है, मेरे को भी अच्छा दिखना चाहिए. So like there is influence of like our peers on us. Like okay तू ऐसा लिख रहा है मैं भी ऐसे. बचपन में से और बचपन से होते then it becomes your handwriting. So like how can this be a trait of a person? Like कैसे? I don't know what I am asking, but still कैसे? हर बार का question वही है. So basically you are asking कि peer का influence होता है कि नहीं handwriting पे ना? हाँ, peer का pressure होता है, but then does it mean like I like मैं दूसरों से बहुत ज़्यादा influence हो रहा है, ये trait हो सकता है क्या उसकी वजह से? अच्छा, so peer का influence होता है, but we subconsciously choose कि हमें कौन से peer से influence होना है. So वो हमें पता नहीं होता है. तूने ऐसे थिंक किया कि देखो वो पर्सन से इन्फ्लुएंस होना है, दैट इज अ सबकॉन्शियस डिसीजन दैट यू मेड वैसा. एंड वो इन्फ्लुएंस तेरे पे कितना टाइम चलेगा वो भी तू चूज करता है. लाइक अभी तू सर्कल नहीं बनाता है ना? नहीं. हाँ, अभी तो डॉट डालता है. हाँ, बिकॉज वो आई के ऊपर डॉट डाल के जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट रहता है वो तेरे में है. अभी तू सर्कल वाला डालता तो तेरा कैरेक्टर में कुछ अलग ट्रेट्स होता, और डॉट डालता तो तेरे कैरेक्टर में कुछ अलग ट्रेट्स है. Like, are there some notes like which you can refer to for this thing? Like
We have, acha. Yeah, the institute, when we attend the lectures and all, so I mean the sessions and all, so tabhi they give us notes, they talk about it. So yeah, we have to note it But down. it's a learnable skill. ऐसा नहीं है कि कोई भी आके कर Yeah, लेगा. anyone can do it. नहीं Anyone, मतलब, but you need to give time, right? उसके लिए तेको करना पड़ेगा. And it's I think it's like you're saying it's scientific, but I think it's more like a psychological field of science. कि it's not like physics and chemistry like it's main science. It's like a psychological thing कि तू कैसे किसी से इन्फ्लुएंस हो रहा है. like you said कि तेरा लेफ्ट मार्जिन कहाँ एंड हो रहा है. that's my choice कि मैं कहाँ. so it's a psychological thing, right? कि साइकोलॉजिकली मैं क्या चूज करेगा कि मेरे को ऐसा वर्ड घुसेड़ के उसमें डालने का है कि थोड़ा ऐसा स्पेस करके एकदम नेचुरली. सो दैट्स हाउ यू अभी मेरे को थोड़ा समझ रहा है कि हाउ यू लाइक जज पीपल. लाइक अगर मैं मतलब आई हैव नॉट लर्न दिस स्किल, बट अगर इफ यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. अगर मैं समझ पूरा एकदम घिचड़ी करके लिख रहा है, सो द पर्सन्स थॉट्स विल बी लाइक कि बहुत मेसी थॉट्स हो रहा है दिमाग में और ही इज लाइक लिखना है कुछ तो, एंड इट्स खूब मेसी. एंड इफ ही इज राइटिंग लाइक सटल लाइक थोड़ा जगह छोड़ के लाइक इट्स लुकिंग नाइस. सो इट्स लाइक ओके आई एम पीस ऑफ माई माइंड है और इतना भी मेसी थॉट्स नहीं है दिमाग में, राइट? एम आई राइट? लाइक एम आई 40-50% तक बोल सकते हैं. अच्छा ठीक है. मतलब अगर सीखा तो मैं भी बन सकता है ग्राफोलॉजिस्ट. हाँ. तो I want to learn. Like yeah. anyone can learn it. Anyone can learn it. It is open for like anyone. Yeah, but I need to give it time ना. तो ऐसा भी है ना कि आलसी है मैं बहुत. ऐसा नहीं है मैं मेन. So it's like after you learn graphology, you will have to do graphotherapy or you'll have to work on yourself first. So you get to like if you get self improvement, then you can say even I tried it. I have achieved my goal. ऐसे. So people, the person you will do the analysis, जिसका analysis आप करोगे, he will also have this confidence कि यार, yeah, I know this person personally and I know like from where to where, what a difference वैसा. So you need to work on it पहले and then you will go ahead with doing others analysis. So what was your story? I guess तेरे पापा है तो तू ऐसी पापा करते तो मेरे को भी करना है. मैं ना हाँ. So like बचपन से like second third standard से dad used to talk about graphology and psychology and ज़्यादा intensely बात नहीं करते थे पर कभी कभी mention करते थे. फिर बाद में ही started talking more about it and मेरे को बहुत curiosity होने लगा कि what is this science, like मेरे को भी सीखना है, मेरे को मेरे friends का करना है and खुद के improvement के लिए करना है. So बाद में he said कि now I'm 13, I was in 8th standard. Tavi he said that now you are big enough so you can do the course, and I guess in April in the 2015 I did that course. 2015, like it's been like 5. So 7th standard से तू कर रही है I guess. 7th or 6th. 8th. Okay, my maths is weak guys. Sorry. Okay. 8th standard से, so you have done like 350. So what is like career opportunity if like I am doing graphology, right? So what would be the career opportunities for after I did graphology? Or it's just like a hobby or thoda sa you can get, but it's not like a full-time career. Or I can make it full-time career. You tell me. So my intention behind doing graphology was first तो काफी ज़्यादा interest and then like a lot of curiosity to know about it. And my mind, since like I was in 8th standard, I had this in my mind that I want to do psychology. So it is like graphology and psychology, they both interrelate with each other. And I have seen a lot of one of my dad's best friend's daughter, she also did the graphology course from the same institute and she's a counselor. So she uses graphology as well as her counseling skills, everything, na? So it works. So it's like a add-on. Like अगर psychologist है तो it's like a add-on to you कि okay you can do this too. Yeah. Also, like there are people who do graphology like properly as their career. So they teach graphology and they have their institute and they also have clients for curing various diseases like depression
and other serious problems, psychological problems that can be cured through graphology. So my dad also does the same thing. He has clients like business clients, CEOs kind of. So they come to him and then he solves their problems through graphology. Like your father is just a graphologist, or he is a like she said he is a psychologist or a counselor, and then it's like okay मेरे को graphology भी आता है. So he is a graphologist and a life coach. So life coaching में when he gives coaching, तभी he uses graphology. अच्छा. Okay, I understood. Like he's like a mentor to people who wants like who are like entrepreneurs and stuff, and like guiding them towards the success, right? Yes. Okay. Right. And he uses graphology for it. So like आप मतलब तुम लोग के बोलने से मेरे को ये पता चला कि it's not like कि तू सिर्फ graphology करके you can like full time business. This is not a full time business. It can be a part time business. But it is a full time. It is full time business, but there it are is many like less people doing it. No, I didn't get you. Like it is a full time business, but there are very less people who are doing it full time. Many people do it as a hobby and they add on their career. That's it. Okay. Like means there is decent amount of like for the audience who wants like और कितना पैसा मिलता है तुम लोग को एक जन का करने का. So what would be the price if someone from the audience want to do their handwriting analysis? What would be the price for a single person? So like I usually take 350. Like that's my price. Okay, like and Sharanya, have you started doing it professionally or you just do? Yeah, I did started professionally. Like 2.5 months I like learned it and मैंने बहुत सारा samples and also collect किया. I worked on it and the institute is amazing. They give us samples also, so we do the analysis. We like send the reports to them. Reports in the sense the proper analysis. We send it to them and they like give like yeah tick okay good. So they gives you marks like okay you judged it right or not. Sorry. When you learn this in the institute and you show कि अरे मैंने इसका analysis किया, so then they give you marks कि okay this one is right, this one is right, this one is right. Or yeah, not marks, but then they're like yeah you have done it right, and agar there is any mistake from our side then they correct us and they're like this thing was not this, it was something else. Like yeah, it's not marking, it's not giving you a rating, but it's like even they get to know like you are improving. They are telling you that you are improving day by day. So is there some site or something that I can give to my audience in description? Is there a site? There is a site, but I don't have it by heart. I will give you later. Okay, you can just give it to me and I will put it in my description box. Yeah, sure. I will, So, okay. So, guys, if you want to learn graphology, you have a link in description. और अगर डिस्काउंट मिलेगा क्या मेरी तरफ से? नहीं ना? नहीं. अरे यार ठीक है अपन बड़े यूट्यूबर बनेंगे तभी हम लोग भी देंगे ऐसा डिस्काउंट. बट फॉर राइट नाउ you have, if you want to learn graphology, you can from Kritika's father institute so you can go down, check the link, and I'm literally I want to study it like, but ऐसा लगता है क्या बहुत टाइम जाएगा ये सब में, but I do want to study it. 4 दिन का कोर्स होता है, 4 दिन का कोर्स होता है और 4 दिन में सब सीखते हैं. हाँ 4-5 दिन का होता है, everyday 3 to 4 hours. Okay, and what's the cost of it, like कितना पैसा? वो सब डिटेल्स पता चल जाएगा साइट पे. Okay, like तुम्ही जाऊन बघाच म्हणजे ऐसा नहीं बताएंगे, साइट पे जाके देखो. Okay, चलेगा. एक क्वेश्चन है मेरा, लाइक तूने मेरे को बोला तब प्लेन पेपर पे लिखने के लिए बोला, वैसा क्यों? यस. सो जब हमारे जो लाइंस होते हैं बुक में जो रूल पेपर होते हैं, सो इन ग्राफोलॉजी दैट स्टैंड्स फॉर रूल्स. ओके. सो वी डोंट वांट टू सी दैट. मतलब अगर तू लिख रही है प्लेन पेपर पे रूल लाइन पे, सो यू विल मोस्ट लाइकली राइट इट वो लाइन के ऊपर, लाइक लाइन को लग के.
सो तेरा हैंडराइटिंग सीधा दिखेगा, लाइक तू ऐसा मतलब ऊपर नीचे नहीं करेगी, तू लाइन पे लिखेगी। पर जब तू प्लेन पेपर पे लिखती है, तेरा हैंडराइटिंग ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है और स्ट्रेट भी रह सकता है। सो ओके, उससे भी मतलब ये तो समझा। ओके, मतलब जैसा हम लोग कभी स्कूल में अगर ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे रहेंगे तो वो ऐसा या ऐसा 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 हाँ ऐसा। हाँ 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 ओके, उससे वैसे भी तो उससे समझता भी है कि समझ वाकड़ा हाँ तिकड़ा लिख रहा है कि सीधा लिख रहा है, उससे भी समझता है। हाँ हाँ लाइक ब्रो, लाइक एवरी एस्पेक्ट ऑफ हैंडराइटिंग उससे कुछ ना कुछ तो रहे उसका। यस I do wanna learn this. I do wanna learn. This is crazy, guys. Like, I don't know, like, कैसे? Like, it's like magic for me. Like, mentalism and stuff. कि कैसे हो रहा है ये सब? तो और कुछ है क्या जिसके मतलब ग्राफोलॉजी के बारे में जो आपको बताना? और एक पार्ट है ग्राफोलॉजी का, जैसे शरण्या ने मेंशन किया ग्राफोथेरेपी। सो इट्स लाइक हम लोग अपना हैंडराइटिंग में सर्टेन चेंजेस कर सकते हैं एंड उससे हमारा बिहेवियर या फिर थॉट्स इम्प्रूव हो सकते हैं, लाइक और हम लोग को जो गोल अचीव करना है उसमें भी हेल्प होता है। सो इन 10 मुझे लाइक ज्यादा परसेंटेज लाना था 95 एंड तभी मैं लाइक अबव एवरेज थी, लाइक इतनी भी टॉप में नहीं आती थी क्लास में। सो तभी मेरे डैड ने सजेस्ट किया दैट मैं अगर कनेक्टेड लिखना स्टार्ट करूँ, लाइक वर्ड्स के बीच लेटर्स के बीच में स्पेस नहीं रखूँ, मतलब पेन उठा के नहीं लिखूँ एंड कनेक्टेड लिखूँ, तो मेरा मेमोरी बढ़ेगा। एंड दैट एक्चुअली हेल्प, लाइक मेरे को उससे मेमोरी बहुत मेरा बढ़ गया। मैं एक बार पढ़ती थी और मेरा उसमें ही हो जाता था। सो विच हेल्प मी टू लाइक स्कोर एंड आई ऑलमोस्ट स्कोर 95 also. How much did you score? 94.6. अरे bro, just give me a fist. I was also 94. Yeah. That's the reason I took science, yeah. That's the reason I took science. Yeah. Graphotherapy, okay. Yeah. Graphotherapy. Okay, would you like to tell me something about graphotherapy, Sharanya? She already mentioned everything, so Like, it's मतलब ऐसा थोड़ा like slight changes in your handwriting can bring a massive change in your personality. That's what we are talking. Like, that's all the graphotherapy is. yeah. So we do signature practice also. Like graphotherapy ka main thing is signature, and you practice your abbreviations. So a signature is like a signature mostly it tells you about yourself and your connection with your family, importance to like self-image, and it basically tells you overall perspective about your personality. So some improvement, like maybe there is something you need to change which will lead to something good for you, something will be good for yourself. So we do that also, like signature practice karte hain. There are abbreviations, like if you want to achieve something, maybe just like she told, she wanted to score 95, so she might be having some abbreviation that she scored 95% in her boards, like specific. You have to be specific and you write it daily. So the main concept is like, now when you wake up in the morning, if you listen to a music, so फिर वो पूरा दिन कान में बजते रहता है, somewhere or the other एक दो बार तो आता ही है दिमाग में. Yeah, so it's like after, so there is this specific time, या फिर early morning if you do it, just after you wake up, you practice your signature and your abbreviations, and it will keep on hitting you somewhere or the other in the whole day कि मैंने ये लिखा था तो I guess मेरे को वो करना चाहिए. I guess नहीं, वो थोड़े दिन के बाद ना वो एक habit हो जाता है, and then you achieve it. So yeah, graphotherapy is very useful. So Very good. any of you learned graphotherapy, like you and Yeah, So, we yeah. Sharanya. okay, so is there something to like reduce your insecurity and stuff? Yes, there is. So what can सबका solution है. I'm asking for audience. This is not for me. I'm asking for audience कि insecurity अगर हो रहा रहेगा, Okay. so what we can do? Yeah, So, please answer. I want the answer. Insecurities का. Yeah. So I guess insecurity comes when you have a big signature. Like the size of your signature is big. Like थोड़े लोग बहुत छोटा signature करते हैं, थोड़े लोग बड़ा signature करते हैं. तो अगर तेरे overall signature या first initial का size बहुत बड़ा होता है, that time you might have insecurities.
So we have solutions to how you can reduce that. Yeah, I want solution. I am asking for audience. They are insecure, I guess. So I want solution. So if you reduce the size, then it will go. अच्छा, but I have to मतलब मेरे को हर रोज करना पड़ेगा ऑडियंस को, मेरे को नहीं, ऑडियंस को हर रोज करना पड़ेगा क्या ऐसा? प्रैक्टिस टाइम every day in the morning, in the first 1 hour after you wake up. Okay, छोटू सा साइन करने का. No, you'll have to practice it. You cannot do it just once. You'll have to do it like 20 times, 30 times, या फिर full page भरो तुम. हाँ. वैसा. वैसा हमने But किया. not in a shabby way. Not in a shabby way. Yeah. Decency, you'll have to maintain it. Okay. I will, मतलब audience will think about this कि अगर insecurity का लगा रहेगा तो क्या करें? You're being such a player, हाँ? You're सब audience के नाम पे bill फाड़ रहा है and खुद से ले रहा है सब. अबे क्या अभी फुकट में मिल रहा है मेरे को सब advice तो मैं ले रहा है, अभी क्या करूँ? But yeah, guys, if you wanna learn this, link is in a description box. You can learn it online. As she said, there is a 3 or 4 days course, and yeah, price वो अभी नहीं बता रही है क्योंकि suspense चाहिए उनको. So go to their site and learn about it. Yeah, and that's it for today, guys. It was a podcast about graphology, and if you loved it, hit the like button, subscribe to my channel, और वो घंटी दबाना भी मत भूलना क्योंकि क्या है, मेरे को ऐसा views मांगता है, मेरे को पैसा मांगता है. So please do it. And yeah, that's it for today. That was Krutika and Sharanya with Tanaya, who is now just, why is she laughing? I don't know, but she's laughing. And that was it from our side. Bye bye. Say bye, guys. Bye.